And there it is, 5:45. Let's start. We are doing time series. Correct? Time series chalo hai, question number 1. Now, some of you had problem with this drawing trend line, right? What I said about trend line? Approximate line. Okay? Approximate line which will have equal number of points on one side and equal number of points on the other side. Always better to have that. And as your diagram goes up, line diagram is going up, your line also should go up. But if you have a problem, what you should do is your data available, upar jo data available hai, of how many years data is available? Data is available of how many years? 11 years. Okay. Now, if you divide 11 by 2, it will come 5.5. So I don't want that. So drop the middle year. 1, 2, 3, 4, 5. इसको drop कर देना है. Middle one drop. Okay. Those who are having problem, for them I am telling you the method. Actually, this dot line क्या करना है? Approximate line. But those who are having problem, for them. Now take this 5 years. First 5 years. And take a total. Total ले लो इनका 5 का. What is the total? Total of first 5. 6. And it is total of 5. So divide by 5. Average निकाल रहा हूं. 6 divided by 5. How much it will come to? 5 ones are 5. 1 left. 5 twos are 10. 1.2 agreed. 1.2 agreed. Average निकाला. First 5 data का average. Now drop the 6th year. Now here remaining 5 इनका total ले लो. Remaining 5 का total ले लो. 38 उसका भी average निकालो. 38 divided by 5. 5 sevens are 35. 7.6. Hello. 7.6 आया क्या? Okay. Now take a middle year from first 5 years. Take a middle year. पहले 5 में से middle year. Which is the middle year? First 5 में से middle year is 1964. Plot this point 1.2. 1.2. Plot it on 1964. ये 1964. And 1.2 is somewhere here. Correct? Hello? ये point plot क्या रेड कलर से? Now remaining last 5 years में से middle year कौन सा है? Last 5 में से middle. Out of the last 5, which is the middle year? 1970. उधर कितना कौन सा point plot करेंगे? 7.6. 1970 पे 7.6 प्लॉट करो. 7 है 7.6. कुछ इधर आ जाएगा. ये 7 है ना. 7.6 थोड़ा सा ऊपर आएगा. फिर इनको ज्वाइन करो. ये 2 पॉइंट मिल गए. नाउ ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग दिस. ये मेहनत का काम है. आपको डिवाइड करना पड़ेगा. वो सब समझा क्या? इधर से भी आएगा. सर ये लाइन थोड़ा सा ऊपर से जाएगा. यस थोड़ा सा मामूली सा इधर से उधर से जाएगा. बोला मैंने माइनर हियर एंड देयर विल डू. समझे क्या? समझा भी? फर्स्ट मेथड इज बेटर. फर्स्ट मेथड इज बेटर. ओके. सेकेंड मेथड में मेहनत करना पड़ेगा. 5 का टोटल लो और मिड ले लो. Okay, that can be done if you are having problem. So is graph clear now? Is graph clear? Now graph में make sure all these points I'm telling you should show x axis and y axis. वो तो आएगा ही आएगा. Make sure you are writing y, the axis name y. 1.1. You are writing y. This is 0.2.
You are writing heading for x-axis 0.3. You are writing y-axis heading 0.4. Okay. You are writing this trend line 0.5. You are writing this scale 0.6. बाकी सब तो होना ही चाहिए. 6 पॉइंट कवर कर ले. ग्राफ तो होना ही चाहिए अदर देन ग्राफ. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होगा ही. टाइटल फॉर एक्स एक्सिस इज ईयर. Writing that name X. So next graph when we draw, I'll ask you whether have you covered all 6 points. तो check करने का. What first method? First method is approximate line. कल्पेश, approximate line थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे चलेगा. कुछ कैलकुलेशन नहीं करने का. Take a scale and say equal number of points on other side, one side, equal number of points on the other side. थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा. ओके, चले. सेकेंड सम. नहीं यार, लिस्ट. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ मेथड. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इधर. लेस स्क्वायर मेथड. अब आई एम जस्ट शोइंग द डेटा t and y. Here is t and then production yt करके. ओके. नाउ लेस स्क्वायर मेथड is having linear trend equation. Y का लाइन है. It is y is equal to a plus bt. इधर कहीं t नहीं लिखा तो भी चलेगा. What is that equation? स्केल आपने जो लिया होगा वो लिख रहा है. Tarwani, scale whatever you have taken, that you have to write. I have taken here 1 centimeter, so I wrote 1 centimeter. On y-axis I took 0.5 centimeter. ये 0.5 है इधर का डिस्टेंस. आपने जो लिखा होगा लिया होगा वो दिखा रहा है. This is 0.5 and this is 1. Accordingly you have to write. आपने जो लिया है स्केल वो लिखने का. मेरा स्केल नहीं लिखना है. You'll have to check it out and write. Okay, चले. So this equation, क्या बोलने का इस equation को? Y is equal to a plus bt. Equation, okay, linear trend equation, linear line का equation है. What is that equation? Y is equal to a plus bt. Okay. Further, there are two normal equations. Normal equation, summation y. What is the equation? Summation y. T लिखने की जरूरत नहीं है. Is equal to na plus b summation t. Okay. Now summation y, dear student, what do you mean by summation y? ऊपर डेटा दिखा रहा हूं मैं. Summation means what? What is sin sigma? Summation means total of y. Okay, it's not that difficult. Total of y लेना. 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 4. Taking total. Is it difficult or is it easy? Difficult or easy? Taking total of y. Easy or difficult? Easy. Okay, it's easy. It's not difficult. It's not difficult. It's easy. Then what is this? Summation t. Total of t. What is that? 1962, 1963, 1964, 1965, so on up to 1972. Taking total of, that is summation t. Total of t. Difficult or easy? Time consuming? Dear student, adding this 1962, 1963, so on 1972. Okay, चलो easy पकड़ लेते हैं. Not so easy, but it's not that easy. Okay, ठीक है. Okay. Not as easy as the earlier one.
0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 4 is easiest, right? हाँ, now next एक और लेते हैं, देखो इधर क्या है, समेशन टी वाई, इस फॉर्मूला में क्या लगेगा, समेशन टी वाई इज इक्वल टू ए समेशन टी प्लस बी समेशन टी स्क्वायर. Look at this summation. What it is? Summation of t square. What do you mean by summation of t square? So suppose x value of x are this 4, 5, 3. Okay. What is summation x square? क्या करना पड़ेगा? If these are the values of x, I want summation x square. What do you mean by summation x square? Summation x square means total of, summation means total of x square. तो पहले x square करना पड़ेगा, फर्स्ट x square करना पड़ेगा. x is 4, तो square is 16, 25 and 9, which is 50 total. समझा क्या? Are you getting me what I am trying to say? Yes. Now we want summation t square. दिख रहा है कि इधर summation t square चाहिए. What is values of t? सारे नहीं लिखता हूं, कुछ 2-3 वैल्यू लिखता हूं. t का वैल्यूज क्या क्या है? 1962, 1963, so on up to 1972. करेक्ट. अभी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. 1962 का स्क्वायर इजी है, डिफिकल्ट है करना? डिफिकल्ट है. सो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, व्हाट इज गिवन हियर, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज फाइंडिंग आउट summation t square, the most difficult job. Correct? All of you agree with me? t का स्क्वायर करना is difficult job. So t is what year? 1972 का स्क्वायर करो, 1963 का स्क्वायर करो, it's difficult, time consuming. So to make it easy, देखो क्या बोल रहा हूं, required summation for the above. क्या क्या summation लगेंगे? What all summations you require? Summation y, right? Summation y is required. Summation t is required. Summation ty is required. And summation t square. एक t repeat हो रहा है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ. रिपीट हो रहा है. दिस इज रिपीटिंग. समेशन टी स्क्वायर. हेलो. तो समेशन टी स्क्वायर इज द मोस्ट डिफिकल्ट. Summation t square is the most difficult. So to make things easier, what you can do is, okay, calculation can be made simpler by transforming t को u में transfer कर देने. Calculation can, if you don't want to do it, don't do it. What I'm now showing you, if you don't want to do it, don't do it. Don't transform t to u. But if you transform t to u, it will become easier. t को अगर u में ट्रांसफॉर्म कर दिया तो हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. कैसे बता रहा हूं मैं, समझे क्या? When t is converted to u, our calculation will become easier. How to convert? I will tell you that.
नाउ फॉर एग्जांपल 1962 है, इस 1962 टी है, इसको कन्वर्ट करने के बाद u, सपोज u इज 1, तो विल इट बी इजी? 1962 को अगर u में कन्वर्ट करके 1 हो गया तो इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 1972 कन्वर्ट होके सपोज 5 हो गया, 1972 कन्वर्टेड टू 5, विल इट बी इजी और नॉट? छोटा नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर, सो इट विल बिकम इजियर. सो व्हाट डू यू मीन बाय converting t to u? Converting t, a bigger number, into a smaller number. क्या करेंगे हम लोग? Converting a bigger number into smaller number. Still answer will remain the same. Now if n is odd, then the formula of u is t minus middle t value upon h. आता हूं इसमें, what do you mean by upon h? Now so u will be is equal to t minus middle t value. Which is middle t value here? What is middle t value? Yeah, I am repeating. अरे मिडल टर्म निकालो ना. मिडल, which one is middle? 11 है ना, तो 6 1 will be middle. 1967 divided by h. H is gap between 2 years. H means gap between 2 years, 2 consecutive years. 2 साल का गैप. 1962 एंड 63 गैप कितना है? 62 एंड 63 में गैप 1 ईयर, सो h is 1 ईयर, सो डिवाइड बाय 1. ये फॉर्मूला हो गया u का. फॉर्मूला ऑफ u, h is what? H is gap between 2 successive years. Hello. So u का फॉर्मूला क्या आ गया? What is formula of u? u का फॉर्मूला आ गया u is equal to t minus 1967 upon 1. Upon 1 is meaningless, agreed? Therefore u is equal to t minus 1967. Correct दोस्तों. Now let me write t from the question. Question में t क्या दे दिया है? What are the values of t? What is the first value of t? What is the first value of t given in the question? Question में पहला वैल्यू क्या दिया? 1962. What is the next value? 1963. So on. What is the last value? Last एकदम 1972. ये क्या है? t है. Now let us find out u. अभी ये जो t है ना, t replace first by 1962. Replace t by 1962. 1962 minus 1967, क्या आंसर आएगा? -5. Then next you replace 1963. T is replaced by 1963. 1963 minus 1967. -4. So on. लास्ट में 1972 है. 1972 minus 1967. हाँ 72 minus 67. 1972 minus 1967. कितना आंसर आएगा? 5. Now look at the column of u and look at the column of t. 1962 क्या बन गया? 1962 is converted to -5. 1963 is converted to -4. 1972 is converted to 5. स्मॉल हो गए, छोटे हो गए.
-5 नहीं, 5 आएगा प्रेम। 72 - 67। हेलो हेलो, इजी हो गया कि नहीं हो गया? u इज स्मॉलर देन t। Now square of -5 is 25 u square. Now -4 का square 16, 5 का square 25. So definitely much more easier. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? Answer will not change even though you are transforming. After transforming also you get same answer. But by transforming what happens? क्या बोला है by transforming? ये देखो इधर क्या बोला है? Calculation can be made simpler. If you say I don't want to transform, don't transform. Do it with 1962, 63 and still you will get same answer. With big number, whatever calculation you are doing, and with small number you are doing the calculation, answer, final answer will be the same. Okay? Clear? Answer with big numbers and answer with small number, once transform, will be the same. Okay, next. If n is even, then the formula is t minus mean of middle t values, middle two t values upon h upon 2. हाँ आ रहा है हर्ष, आ रहा है देख। Let us drop the last year. ऊपर के डेटा में से let us drop the last year. अभी कितना? हाँ, there is one correction to be made in your textbook. टेक्स्ट बुक है क्या आपके पास? करेक्शन, एक फॉर्मूला गलत गया टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 65, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 65। Come to page number 65 textbook. There is a correction to be done. n is even में, n is और करेक्ट फॉर्मूला है। n is even में डिवाइड बाय 2 is missing. मिला क्या आपको? n is even में डिवाइड बाय 2 is missing. Add that divide by 2. There is a mistake, printing mistake in the textbook. First formula is correct. Page number 65 on the left hand side. Formulas. If n is odd, n is even. हर्ष मिला क्या? ऊपर से 1 2 3 4 5 6 line somewhere. That formula t minus mean of 2 middle t values upon h upon 2. Upon 2 is missing. Everyone done the correction? सब जन ने करेक्शन कर लिया? चलो, हाँ, अब ले लो ये वाला केस ले लो। लास्ट ईयर नहीं है डेटा में, अप टू 71 ही है। तो कितने ईयर्स हो गए? 10 ईयर्स हो गए। इवन हो गया, तो इवन का फॉर्मूला क्या है? u इज इक्वल टू टी माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज। मिडल टू वैल्यूज देखूंगा भाई, विच आर द मिडल टू वैल्यूज? Which are the middle two values? If 10 years, middle two values are 1966 plus 1967 divided by 2. पागल के जैसा टोटल करते मत बैठो, इसका आंसर कितना आने वाला है मालूम है? 1966.5. एग्रीड? दोनों में डिफरेंस कितना है?
दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 1, उसका आधा करो, 1 का आधा, हाफ ऑफ 1, difference is half 1 का half 0.5 and add it to the first number 1966 में ऐड करना, divided by h upon 2. h is difference between 2 years, 1 divided by 2. हेलो, समझा क्या? समझा क्या ये? अब इसका क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 in bracket t minus 1966.5. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 1/2 इधर डिनोमिनेटर में, इनटू हो जाएगा, रेसिप्रोकल एंड इनटू. हेलो,